गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स जो हमें एक-एक करके जॉइन कर रहे हैं। गाइस आप हमें जैसे-जैसे जॉइन कर रहे हैं प्लीज़ ड्रॉप अस अ हाई इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for joining us and welcome to our IPO series, IPO interview series. हम फिर से इस हफ्ते आपके लिए एक नई कंपनी लाए हैं जिसके मैनेजमेंट टीम से हम बातचीत करेंगे। Okay, I can see people joining. So hi guys, thank you so much for joining us today. आज हम बात करेंगे SBFC Finance Limited की मैनेजमेंट टीम के साथ। इनका IPO इशू ओपन होगा ऑन 3rd अगस्त और क्लोज होगा ऑन 7th अगस्त 2023। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम ₹54 टू ₹57 पर शेयर। इशू की टोटल वर्थ है 1025 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 600 करोड़ का और ओएफएस भी है 425 करोड़ का। मैं आज बात करूंगी मिस्टर महेश दयानी, सीबीओ, एंड मिस्टर पंकज पोद्दार, सीआरओ, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम श्योर आप काफ़ी बिजी होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, बट वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू स्पीक टू आवर ऑडियंस। सबसे पहले आप मुझे बता सकते हैं कि अपनी कंपनी की जर्नी के बारे में, इफ़ यू कैन गिव आवर व्यूअर्स अ स्मॉल हाइलाइट। या हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एसबीएफसी ये जर्नी शुरू हुई 2017 में एंड इट इज़ व्हेन हम सब बैंकर्स जब सब एक साथ मिले और हमने सोचा और हम एज बैंकर्स हमने एसएमई में काफ़ी डिटेल तरीके से काम किया था। वी गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 decades, मोर देन 20 years, एंड वी ऑलवेज लुक्ड एट एमएसएमई फ्रॉम अ बैंकर्स लेंस। और हमने इस जर्नी में देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक्स ऑन द हायर एंड ऑफ द सेगमेंट शिफ्ट होते गए और जो लोअर एंड ऑफ द सेगमेंट रहा है, जो जिनकी एवरेज रिक्वायरमेंट 5 लाख से 30 लाख की रहती है, तो वो कहीं ना कहीं पे वो एक अबैंडन सा एक सेगमेंट हो गया था। रेगुलेटरी सपोर्ट आर्किटेक्चर बड़ा स्ट्रांग था, जहाँ पे गवर्नमेंट, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं और इस सेगमेंट को ग्रो करना चाहते थे। सो हमने कहा कि चलो जब भी एक ऐसा मौका मिले तब हम इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरल जर्नी में हम आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स वेयर द जर्नी ऑफ एसबीएफसी स्टार्टेड, and we said that we will solve for a larger problem on the MSME side because there is clearly a supply side opportunity that you see. So if you really look at, there are multiple reports that are floating, but if you really look at the credit need in the segment, that is close to around 70 lakh crores. And that's a segment report which has been populated by IFC. That number stands today almost 100,000 crores. So that's a large market. कहते हैं कि उसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है वो करीबन 20 1 लाख करोड़ ही है जो सेगमेंट फुलफिल्ड है। बाकी 80% is still funded by unorganized sector, which means friends, family, relatives, local money lenders, and local bodies. So we thought that this is an interesting area that we should operate in. And हमने जितनी भी कंपनीज देखी, we realized that most of the companies are very strong companies who are very local based, in the sense जो वहाँ पे उन्होंने 3 या 4 स्टेट में काम कर लिया, बहुत बेहतरीन कंपनीज हैं। वी एडमायर देम एज कॉम्पिटिटर्स। किसी ने साउथ में शुरू किया, किसी ने वेस्ट में शुरू किया, ईस्ट नॉर्थ में ज़्यादा नहीं थे, बट जो भी उन्होंने काम किया, चाहे वेस्ट में काम किया या साउथ में काम किया, बेहतरीन कंपनीज बिल्ड की। तो हमने कहा कि नेशनल प्ले नहीं है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। अगर कोई एक नेशनल प्ले, एमएसएमई प्ले जिसने नेशनली बिल्ड किया हो, डेडिकेटेड और फोकस तरीके से एमएसएमई पे ही काम किया हो, तो ऐसी कोई कंपनी हमको दिखी नहीं। तो हमने कहा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम बिल्ड करें राइट फ्रॉम डे वन। सो हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया। सो वी आर प्रेजेंट इन 16 स्टेट्स, we are present in more than 120 cities. We've got more than 152 branches, and this has been an excellent journey over the last 5 to 6 years. And we've ended 2023 with an AUM of 5,000 crores, and we've ended with a profit of almost 150 crores. That's been, I've summarized probably the last 5 years, 6 years, in the way that we've had multiple crises, an ILFS, a DHFL crisis. We've had 2 rounds of COVID. But I think the good part where you feel professionally very satisfied is that you've built a good team together.
A lot of experienced bankers have come through, worked with fantastic organizations, built scaled businesses, and all of them have been with us together in this particular journey. And I guess we're more excited on the growth and opportunity that lies ahead of us, compared to what we've delivered so far. राइट, और काफ़ी इम्प्रेसिव जर्नी रही है आपकी, जैसे आपने डिस्क्राइब की। इशू के बारे में बात करते हैं, आईपीओ के बारे में। इशू के ऑब्जेक्टिव्स बताएँगे, प्रोसीड्स किस हिसाब से यूज़ होने वाले हैं? So, if you look at the overall IPO size, 1,025 crores is the total IPO size, out of which 600 crores is primary. If you look at the entire life cycle of a company, आप देखेंगे कि जो पहले इनिशियल ईयर्स होते हैं, उस इनिशियल ईयर्स में इक्विटी कंपोनेंट ज़्यादा रहता है और बैंक लेवरेज कम रहता है। एंड इट इज़, हमने ये जर्नी तय की है, बट बीइंग ऑन द अदर साइड, जहाँ पे इंसिस्टेंस रहता है कि पहले इनिशियल पीरियड पे आप इक्विटी ज्यादा रखें और आप ग्रोथ दिखाएं, अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएं। उसके बाद द बैंक्स टेंड टू गेट अ लॉट मोर कंफर्टेबल विद यू, and then they start to lend you a lot more, and then the leverage play comes in the second phase. I think we are in the phase where we've, over the last 5 6 years, we've built reasonable scale, and I think we are still in that built up stage because we just cover 25% of the total districts in a state. So we have a long runway for us ahead of us, and that's the reason that we need to capitalize adequately. So if you look at our growth, we've been growing more than 40% on a compounded basis, uh, and the segment and the market is growing at almost 24-25%. So जो सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं वो 2.5 लाख करोड़ का सेगमेंट है, जो ग्रो कर रहा है 23-24% पे, विच मीन्स दैट कि ये मार्केट ही डबल होगा एवरी 3 इयर्स। और अगर इस ग्रोथ को हमको मेंटेन करना है और हमको इस पर्टिकुलर मार्केट में ऑपरेट करना है, तो हमको वो ग्रोथ कैपिटल चाहिए। सो अ लॉट ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स दैट यू वुड सी, the entire IPO proceeds that will move in is going to go towards the growth capital of the company. राइट, और प्राइस बैंड के बारे में हमें बताएँगे। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 54 टू 57 रुपीज़ पर शेयर। इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? So we've set a price band of 54 to 57, just to probably take most of our viewers slightly behind. In November, when we filed the DRHP, we had filed a DRHP for 1,600 crores. We had refiled for a lower number of 1,025, and that was largely because a lot of secondary transactions had happened with a lot of new investors showing significant amount of interest, and most of the transactions that have happened between 55 and 57 during this period. तो जो हमारा प्राइमरी आईपीओ था जो 750 करोड़ था और अब 600 करोड़ है, तो 150 करोड़ का जो हमने प्री आईपीओ किया वो भी हमने 55 और 57 के बीच में ही किया. So that's the value discovery that happened over the last 6 months for the new set of investors who also are going to double up in the main anchor as well. राइट, आपने मेंशन किया कि आपको काफ़ी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं फिलहाल, टू एक्सपैंड फर्दर, टू टेक अपॉर्च्युनिटीज़ इन द एक्सपैंडिंग मार्केट इटसेल्फ। डिफरेंट किसी और सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करने के प्लान्स हैं? एंड सेकेंडली, कोई प्लान्स आउटलाइंड हैं और किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने के? सो हम अब जहाँ पर हैं हम 16 स्टेट्स में हैं, और ये 16 स्टेट्स कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 92% ऑफ द टोटल क्रेडिट, 92% ऑफ द टोटल क्रेडिट। तो हमको लगता नहीं है कि हमें कोई और स्टेट में जाने की जरूरत है। हम जिस स्टेट्स में हम हैं हमको उसी स्टेट्स में डीप जाना है, उस वहाँ पे और इंटेंसिफाई करना है, और हमको मार्केट शेयर एक स्टेट लेवल पे रखना है, और उस स्टेट में हमको प्रॉफिटेबल बनना है, और उसमें एक लीडर ऑफ अ सेगमेंट बनना है। तो क्या है कि हमको एक मोट मिल गया है कि ये हमारा मोट है, ये हमारा सेगमेंट है, अब हमको उसमें एक्सेल करना है, हमको और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। हमको लगता है कि ये वाला जो टारगेट सेगमेंट है, टारगेट मार्केट है, वो हमको सिग्निफिकेंट रनवे फॉर ग्रोथ देगा इन सब्सटैंशियल पीरियड्स ऑफ टाइम टू कम, एंड वी डोंट वांट टू लुक एट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिंग व्हाट वी हैव ऑन हैंड.
राइट, काफ़ी फ़ोकस्ड हैं आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं डेफ़िनिटली। आपने मेंशन किया कि जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं वो फ़िलहाल यूनिक है, उसमें ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स नहीं हैं। इज़ देयर नोबडी दैट यू कैन काउंट एज़ कॉम्पिटिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? No, I guess competition is everywhere. I didn't say that there is no competition. I said that yes, there is. Uh, the demand is so large that राइट, even if you have more players, it is a welcome thing to do because obviously you're serving a magnanimous, credit demand from this particular sector. What it means is that you have competition everywhere. So you go to certain states in South, you meet up with competition. You go to West, you meet some competitors. What I meant is that you don't have a competitor who's at a national play, that who's present in across West, North, South, and East. राइट, That is what probably I meant. But yes, you have competition, and we admire our competitors. And there is so much to learn from competition because one of them probably has done exceedingly well in a particular state using a particular model. His cost structures are brilliant. Someone has priced it well in a different market. Somebody has a unique way of collecting. So I think the more the merrier, and there is adequate room for everybody to play in that particular segment. And I would probably suggest that if we this particular segment needs more players to actually serve the large need for this particular segment. राइट, दैट साउंड्स ग्रेट। और इंटरव्यू क्लोज़ करने से पहले हमारे व्यूअर्स को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी बिज़ी, सो आई लेट यू गो आफ्टर दिस वन थिंग। Uh, I just have, we've viewed it from a banker's lens, and we've seen a lot of companies grow. And, professionally speaking, a lot of SMEs that we had funded in our early part of our careers, we feel extremely good that currently they are listed in some way or the other. I guess we're also going through a similar journey where we've completed 5, 6 years and we have a reasonable outcome to give across most of the parameters. uh, my only takeaway is going to be that this is a market that is going to be the market that one has to look out for a segment that is going to unfold. So clearly, from a growth perspective, there is no issue. uh, I guess people can look at the management. All of us have been bankers. Pankaj, who's with us, he's been the chief risk officer. He's been with Bajaj. You have head of collections. He's been with Bajaj for 20 years. I think the entire management depth, if you look at it, all these professionals have come in together to build this company ground up, despite having their very senior roles and jobs that they were playing in their respective organizations. So probably we've come in together to build something extremely beautiful, and we would love to have more participation of investors in our journey. That's the limited takeaway that I would give. Right. Once again, thank you so much for giving us your time and all the best for the IPO. And we hope to speak to you once again soon. Thank you. Yeah, Thank thank you. you. Thank you.